Good morning, students. Equilibrium chapter. We were doing QC, KC, how to predict the direction of chemical reaction. And in that, we had concluded that QC is same in the formula as KC. क्या बोला था QC को? Reaction quotient. And KC is equilibrium constant, but both formula-wise both are same. But concentration terms used in them are different. KC का मतलब होता है equilibrium constant. What is QC? It is reaction quotient, and that is concentration of product upon concentrations of reactants. KC, the formula is same. Concentrations of products upon concentrations of reactants. But the concentration terms that we used in the formula, they are different. Here, the concentration terms are at equilibrium concentrations. When equilibrium is established, concentrations of reactant and products to be placed here. And at any time other than equilibrium state, whatever be the concentrations of reactant and products, that is to be placed here. So QC and KC. Now, how to predict the direction of the reaction? Suppose QC is more than KC. Three possibilities can arise. QC more than KC. Then reaction will be moving in the reverse direction. Reaction moves in reverse direction. ज़्यादा है ना, तो reverse आएगा तो KC के बराबर होगा. Moves in reverse direction. Suppose QC is less than KC. KC is more, QC is less. Then to achieve the value of KC, reaction will move in forward direction. So reaction moves in forward direction. आ फिक्स हो रही है, KC फिक्स हो रही है, ये कांस्टेंट है. एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. QC चेंज होता है. QC को KC के बराबर होना है, तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा in order to make QC and KC same. If QC and KC are already same, then equilibrium is established. मतलब reaction is moving in forward and backward direction, but with same speed. In first case, when QC is more than KC, the reaction moves in reverse direction more speedily compared to the forward direction. And KC अगर ज़्यादा है, तो reaction is at present moving in the forward direction. And when both are same, the reaction is at equilibrium, मतलब speed of forward and backward reaction same. Clear? अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पता लगेगा कैसे इसको यूज करना है. Question number 7.7. The value of Kc for the reaction 2A gives B plus C. A gives B plus C. Its equilibrium constant is given 2 into 10 to the power minus 3. And KCI पूछे 2 into 10 to the power minus 3. At a given time, composition of reaction mixture is at any time, at a given time. मतलब at any time other than equilibrium. Concentration of A, concentration of B, concentration of C, all three are same and they are given as 3 into 10 to the power minus 4. Molar. In which direction the reaction will proceed? We have to find the direction in which the reaction proceeds. KC given है. अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा?
QC. What is the formula for finding QC? It's concentration of B, concentration of C upon concentration of A, the square. Put up the values. All are same. 3 into 10 to the power minus 4. This is also 3 into 10 to the power minus 4 upon 3 into 10 to the power minus 4 का square. सब cancel हो जाएगा. आंसर कितना आएगा? 1. QC is 1. And what is KC given? 0.002. 2 into 10 to the power minus 3 means 0.002. And QC is 1. Which is more? QC is more than KC. At this particular time, QC is more than KC. And if QC is more than KC, then reaction will move in. अगर QC ज़्यादा है, तो reaction किस direction में जाएगा? Reverse direction. So what is the direction of reaction? Reverse. अगर KC बड़ा आता, QC छोटा आता, तो reaction will move in forward direction. Here, the reaction moves in backward direction or reverse direction. So with the help of values of QC and KC, we can find out in which direction the reaction is moving. See one more example. Not textbook, other than textbook, one example we are solving. For this reaction, H2 plus I2 gives 2HI. Equilibrium constant for this reaction is given as 2 into 10 raised to the power 3. Hydrogen plus iodine gives 2HI and equilibrium constant value is given as 2 into 10 to the power 3. At any time, at any given time, other than equilibrium, values of concentrations of hydrogen is 2 molar, that of iodine is 1 into 10 to the power minus 2 molar, and that of HI is given as 2 into 10 raised to the power minus 3 molar. He is telling what is the direction of reaction at this instant. Instant ऊपर what is the direction of reaction. KC is given. What we have to find out? QC. करो find out. QC की formula क्या होगी? Formula is same as KC. कैसे लिखेंगे इसके लिए? Concentration of HI the square, concentration of H2, concentration of I2. Okay. Put up the values. 2 into 10 to the power minus 3 the square upon hydrogen 2, iodine 1 into 10 to the power minus 2. Solve करते हैं इसको. ऊपर हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 2. So answer is 2 into 10 raised to the power minus 4. This is QC. 2 multiplied 10 to the power minus 4. And what is KC? 2 into 10 to the power 3. This time KC is more than QC. KC ज्यादा है, QC कम है. तो अगर QC का वैल्यू कम है, KC ज्यादा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? The reaction will move in forward direction. So it is always moving in the forward direction at this particular time. So we can predict the direction of reaction by calculating QC and KC. KC will be given to you. आपको concentrations दिया होगा, QC find करना है. अगर reaction question कम आता है KC से, तो forward direction में जाएगा reaction. If QC is more than KC, backward direction में जाएगा reaction. और अगर दोनों same है by the way, तो reaction is in equilibrium. Neither it will move in forward nor it will move in backward. In both the direction, it will move in with same speed. Clear? Now, topic we were doing application of equilibrium constant. KC के applications अपन पढ़ रहे हैं, KC के uses अपन पढ़ रहे हैं. KC को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो equilibrium constant को, वो हम स्टडी कर रहे हैं. Clear? अब आता है calculating equilibrium concentrations. This is very, very important. Calculating equilibrium concentrations. If KC is given, then how to find equilibrium concentrations?
calculating equilibrium concentrations. Calculating equilibrium concentrations. अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, बोलेगा कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो क्या कॉन्सेंट्रेशंस होंगी, फाइंड आउट करके बताओ. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कैन बी कैलकुलेटेड by following steps, and that you have to keep in mind, because ये सिर्फ इसी में नहीं, हम आगे 2-3 चैप्टर्स और पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी काम आते हैं. क्लियर? इसलिए ध्यान से करना है हमको. न्यूमेरिकल्स जनरली इस पे आता है, बट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट सम, विल अंडरस्टैंड सम स्टेप्स फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. कोई भी क्वेश्चन आपको जो भी दिया हो, सबसे पहले उसकी आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है. बैलेंस्ड, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो आंसर विल बी रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट बैलेंस्ड रिएक्शन. विदाउट बैलेंसिंग इफ यू स्टार्ट देन आवर आंसर विल बी रॉन्ग. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो आप फाइंड कर रहे हो वो गलत आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. सपोज इसने बोला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया. So write down balanced equation. Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. NH3. Symbolic form में balanced equation आपको लिखना है. Second step is, under the balanced equation, make a table that lists for each substance involved in the reaction. Initial concentration, change in concentration on going to the equilibrium concentration. On constructing the table, define X as the concentration is one of the substance. Then use this stoichiometry by the reaction to determine the concentrations of other substance. Substitute the values in the equilibrium constant and solve it for X. क्या बोल रहा है? टेबल बनाना है. जैसे हमारे पास ये कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई भी रिएक्शन दिया है, बैलेंस्ड इक्वेशन आया 2A plus B gives, for example, 3C plus D. ठीक है? Just now we are just taking the example. Balanced equation in a question is 2A plus B gives 3C plus D. What we have to write, first of all, we have to make a table. कैसे बनाना है टेबल? सबसे पहले हमको इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस लिखना है. क्या लिखना है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर. गिवन होगा, बोलेगा A का कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर, B का कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोल पर लीटर. तो जो भी आपको दिया हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसका भी दिया हो सकता है इनका भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो. इन अ कंटेनर वी आर टेकिंग 2 मोल ऑफ A, 3 मोल ऑफ B, 3 मोल ऑफ C एट 1 मोल ऑफ D. ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि रिएक्शन में हम सिर्फ रिएक्टेंट ही लेते हैं. They can take reactant as well as products in the reaction. So whatever be the initial concentrations that we have to mention. क्वेश्चन ढंग से रीड करोगे तो समझ आ जाएगा कि कौन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आपको दिए हुए हैं, तो वो आपको उनके नीचे प्लेस करना है. सपोज हमको दिया है कि 1 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ B रिएक्ट, तो इनिशियली ये तो दोनों नहीं होंगे, because it is given that only A and B react and their concentrations are 1 and 2 mole per liter. Clear? अब हमने 1 और 2 डाला है, 1 मोल 2 मोल ऑफ B, but how much they react? कितना रिएक्ट होगा, कितना कंज्यूम होगा, कितना प्रोड्यूस होगा? हाउ टू फाइंड आउट दैट? सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट दैट इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. कई लोग ये स्किप करते हैं, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये लिखो तो इजी होता है, आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा, आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा. इसलिए डोंट स्किप दिस स्टेप, राइट डाउन दिस स्टेप. बुक में भी कई जगह पे नहीं होगा, बट यू राइट इट. क्लियर? इसको हम एक्स सपोज करेंगे, कितना कंज्यूम हो रहा है या कितना प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको पता नहीं. कंज्यूम होगा हमारा रिएक्टेंट, प्रोड्यूस होगा हमारा प्रोडक्ट्स. तो हाउ टू राइट? सपोज एक्स मोल कंज्यूम होता है ना, तो इसमें से कितना कंज्यूम होगा? 1 minus 2x, सॉरी 2x. कितना कंज्यूम होगा? 2x. ये कितना कंज्यूम होगा? x. ये कितना बनेगा? 3x. ये कितना बनेगा? x. इक्विलिब्रियम पे कितना कंज्यूम और कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है.
देखो जहां पे 2a है मैंने 2x लिखा है, जहां पे 3c है वहां पे मैंने 3x लिखा है, जहां पे सिर्फ 1b है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, I had written only x. यहाँ पे 1 है, I had written only x. So according to the balanced equation we have to write this step. 4x हो तो 4x लिखना है. चलिए नेक्स्ट. अब लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन. लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे हमको जो भी लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लेस करना है. कैसे करेंगे? इनिशियली वी हैड टेकन this much consumed, so what is left? 1 minus 2x. Here what is left? 2 minus x. Here what is, how much produced? 0 plus 3x. यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है. 0 plus x. अभी 0 है. अगर वहां पे 1 और 2 मोल लेके उसने अपन को भेजा होता कंटेनर में 1 और 2 मोल डालो तो थोड़ी हम 0 लिख सकते थे. तो 1 plus 3x आता, 2 plus x आता. Products always produced, they are formed, so they'll be added, and here they are consumed, so they'll be subtracted. These are the equilibrium concentrations. Left concentration at equilibrium for A, for B, for C, and for D. अब जब हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप ये x फाइंड कर सकते हो. अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया होता है. ऐसा कुछ गिवन होगा we are able to easily find out x. वो x फाइंड करके इसमें प्लेस करना है ताकि चारों कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाए. सपोज कुछ भी x दिया और हम सॉल्व करें तो सपोज ये वैल्यू आ रहा है 0.2, ये वैल्यू आ रहा है 0.4, यहाँ आ रहा है 0.6 और यहाँ आ रहा है 0.3. तो आपको क्या मिल जाएंगी? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. कैसे लिख दिया मैंने? 1 minus 2x को 0.2 गिवन होगा. हमको x निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमको दिया होगा, वो हम प्लेस करेंगे तो हम x फाइंड कर लेंगे. उस x को प्लेस करोगे यहाँ पे तो आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड कर लेंगे. And once we calculated equilibrium concentrations, just by applying formula we can calculate Kc. What is the formula of Kc? Concentration of C, the cube, concentration of D, then concentration of A, the square, here concentration of B. Just we have to place the value. C का 0.6 place कर दो, है ना? फिर what is equilibrium concentration of D? 0.3. What is for A? It is 0.2 the square. And what is for B? 0.4. This is for B. This is for A. This is C. And this is D. What are these? These are the concentrations at equilibrium. And in Kc formula, we are placing concentrations at equilibrium. So we have to make this table. This is very important. First, write down balanced chemical reaction. And then we have to form a table. That is very important. तीन चीजें लिखनी. Initial, consumed और left. वो तीन चीजों को लिख के फिर हमको Kc की फॉर्मूला प्लेस करके और Kc हमको फाइंड करना है. Clear? Now this can be understood. Steps never be asked. Steps नहीं पूछेंगे आपको कि steps लिखिए कैसे करना है. No. Questions will be asked and questions we have to solve. कैसे करते हैं देखिए, हम एक सम करके देखते हैं. One numerical will do so that you can understand how to find out. Question number 7.9. Solved example 7.9. 3 mole of PCl5 kept in 1 liter closed vessel allowed to attain equilibrium. Calculate the composition of the mixture at equilibrium. Kc is 1.8. 3 mole PCl5 and it is allowed to decompose. We should know the reaction. If you don't know that, understand. PCl5 react to give PCl3 and Cl2. This is fixed. Whenever PCl5 decompose, it gives PCl3 and chlorine. Okay? देख लो balanced है equation? Yes, it is balanced. So first of all, first step is to write the balanced chemical reaction and we had written. Now next, initial concentration. Table बनाना है अपन. पहले initial क्या दिया है पढ़ो आप.
तो हमको दिया है 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed vessel. Initially, what is initial concentration? It is 3 mole per liter. 1 liter दिया है, so it is 3 mole per liter of PCl5 is taken, and these are the concentrations 0 because initially only PCl5 is taken. 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ आएगा. Initially 3 moles of PCl5 taken in 1 liter container. What it mean? Concentration of PCl5 is given as 3 molar. Obvious, PCl3 और क्लोरीन तो डाला नहीं है, इसलिए उनकी concentrations क्या होंगी? 0. So initial concentration का टेबल हमने प्लेस कर दिया. अब क्या लिखेंगे? Consumed, produced. Consumed and produced. साथ में लिखेंगे. क्या बताया था वो? X लेना है आपको. X, this is X, this is also X. Why? Because all are having stoichiometric coefficient 1. So you have to write X, X, X. Suppose कहीं पे 2 होता तो 2x लिखते, 3 होता तो 3x लिखते, 1 है. Stoichiometric coefficient is 1, so we have to write 1. अब left concentration at equilibrium. Left concentration at equilibrium. What will be 3 minus x? This would be 0 plus x. This would be 0 plus x. So it is 3 minus x. This is x and this is x. These are the equilibrium concentrations of all the 3 components: PCl5, PCl3 and Cl2. Now Kc is given. We can find out the x. What is the formula of Kc? Concentration of product, that is PCl3, and chlorine. Concentration of reactant, PCl5. Put up all the values. Kc भी दिया हुआ है हमको. कितना दिया है? Kc for the reaction is given as 1.8. 1.8. That is equal to, what is PCl3 equilibrium concentration? X. What is Cl2 equilibrium concentration? X. What is PCl5 concentration? 3 minus x. Quadratic equation आया. Solve for x. Multiply करो इसको. क्या बनेगा? 1.8 multiplied by 3 minus x, that is equal to x square. 1.8, 3 minus x, that is equal to x square. It is quadratic equation. We have to solve it. How to solve? 18 3s are 54. So 5.4, 1.8x equal to x square. So x square plus 1.8x minus 5.4 is equal to 0. आप 10th standard में quadratic equation को solve करते थे, है ना? We were solving quadratic equation in 10th standard. बीच वाली term को split करके, middle term splitting, factors करके हम लोग find करते थे ना? और नहीं आता है तो b square minus 4ac से calculate कर सकते हैं. अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, कौन सी आएगी? x वैल्यू will be 1.59. कितना मिलेगा आपको? 1.59. हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हो. फिर एक फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अपॉन 2a. What are the values of this? Is a 1 is 1. What is b? 1.8. And what is c? Minus 5.4. Put up these values in this formula. You can calculate x. Always when we solve quadratic equation, there are two values of x. So one value will be 1.59. So what is the value of x? 1.59. इसमें प्लेस कर दो, इसमें प्लेस कर दो, इसमें प्लेस कर दो. 1.59 कंपोजिशन आ जाएगा. कंपोजिशन मतलब लेफ्ट concentration at equilibrium. So what will be the concentration of PCl3? 1.59. x का वैल्यू आपको 1.59 मिलेगा. यहाँ भी 1.59. And what is the value of PCl5? It's 3 minus x, so 3 minus 1.59. So table we have to form, then easily we can calculate. जो भी आपको find out करना है, that we can find out. Clear? देखो एक और क्वेश्चन. जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपको समझ आएगा. Okay? One more we will see.
7.16. Question number 7.16. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. What is the equilibrium concentration of each of the substance in equilibrium when initial concentration of ICl was 0.78? अपन को इक्वेशन दिया हुआ है 2ICl give I2 plus Cl2. 2ICl gives I2 plus Cl2. टेबल में क्या लिखना है? सबसे पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर क्या लिखना है? कंज्यूम्ड, प्रोड्यूस्ड, उसके बाद लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. दिस टेबल वी हैव टू फॉर्म. Three things we have to write: initial concentration, then consumed or produced, after that left concentration at equilibrium. And what we have to find out? We have to find out the value of equilibrium concentrations. Find out करनी है. Kc given है 0.14. Now if we read out the question, initial concentration of ICl is given as 0.78. What is initial concentration given? 0.78 molar, and these two will be 0. Because only ICl is taken, so concentration of ICl 0.78 और बाकी दोनों कितने हो जाएंगे? 0. अब लिखेंगे कंज्यूम्ड. कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे 2 है ना, so it would be 2x. यहाँ पे कोफिशिएंट इज 1, so it would be x. यहाँ 1 है तो x. मतलब ये जितना कंज्यूम होगा उसका हाफ ये दोनों बनेगा. सपोज कंज्यूम हो रहा है 4, ये दोनों कितने बनेंगे? 2 2. ये कंज्यूम हो रहा है 8, ये दोनों कितने बनेंगे? 4 4. अकॉर्डिंग टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे विल रिएक्ट. यहाँ पे 2 है मतलब वो डबल कंज्यूम होगा और उसके हाफ ये दोनों फॉर्म होंगे. व्हाट इज लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन? 0.78 minus 2x. This would be x, this would be x. These are the equilibrium concentrations of ICl, I2 and Cl2. Okay, टेबल फॉर्म हो गया. अब आपको इसमें दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. कितना दिया है? 0.14. Kc of the reaction is given as 0.14. Now what we have to do? Put up the values, calculate the x value. Kc ने फॉर्मूला रखो. सूत्र से Kc, concentration of iodine at equilibrium, concentration of chlorine at equilibrium, concentration of ICl raised to the power 2. ये भी concentration है, ये भी concentration है, ये भी concentration. तो ICl की कौन सी concentration प्लेस करोगे आप? ICl, iodine और chlorine, तीनों के लिए हम equilibrium concentrations प्लेस करेंगे. Not the initial, not the consumed one. Equilibrium, because this is equilibrium constant. तो जो भी लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, दैट वी हैव टू प्लेस. पुट अप करो सारी वैल्यूज. Kc की वैल्यू 0.14. व्हाट इज I2? x. x 0.78 minus 2x the square. 0.14 is equal to xx 0.78 minus 2x the whole square. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? दिस वुड बी 0.14 मल्टीप्लाइड बाय, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर 0.78 minus 2x the whole square. Take square root both the side. If you take square root both the side, it will be easy. If you take square root both the side, it will be easy. So take square root both the side. क्वाड्रेटिक है लेकिन ऐसे कर सकते हैं. स्क्वायर रूट बोथ द साइड. क्या जाएगा? 0.14 का रूट निकालना पड़ेगा. अंडर रूट ऑफ 0.14 प्लस माइनस, दिस वुड बी x and this would be 0.78 minus 2x. यहाँ से स्क्वायर वो हो जाएगा.
और यहाँ पे अपन 0.14 का अंडर रूट निकाल लेंगे. We can find out root from calculator because in board exam calculator is allowed. So what will be the root of this? It will be 0.34 something. इसका रूट कितना आएगा? 0.3 ले लेते हैं हम. So this would be 0.3, that is equal to plus minus x upon 0.78 minus 2x. एक बार प्लस लोगे तो एक वैल्यू मिलेगा, माइनस लोगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव टू वैल्यूज. x का दो वैल्यूज आना चाहिए, तो दो वैल्यू में से आएगा इसमें. एक बार आप प्लस प्लेस करोगे तो एक वैल्यू आएगा, एक बार माइनस प्लेस करोगे तो दूसरा वैल्यू आएगा. पहले अपन प्लस प्लेस करके देखते हैं, ठीक है. It's 0.3 multiplied by 0.78 minus 2x equal to x. और दूसरी बार 0.378 minus 2x minus x. मल्टीप्लाई करो. 8 3 24 2 23.234 minus 0.6x that is equal to x. उधर ले जाइए. 1.6x equal to 0.234. So x would be 0.234 divided by 1.6. Same way we can calculate this. 0.234 minus 0.6x is equal to minus x. If we take that side, 0.234 equals minus 0.4x. और x का वैल्यू नेगेटिव आएगा. कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव थोड़ी होता है. कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव थोड़ा होया तो नेगेटिव आ जाए. आ वैल्यू पॉसिबल नहीं, आ वैल्यू पॉसिबल आंसर. सो दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. निकालो क्या आएगा x का वैल्यू. डिवाइड कर लो 16 से उसको. डेसिमल अगर रिमूव करोगे तो दो जीरोस आएंगे. 234 अपॉन 1600. 100 को 10 to the power minus 2 लिख सकते हो. What's the value? 14 something. 14 into 10 to the power minus 2, that is 0.14. That is the value of x. हमको निकालने equilibrium concentrations. What will be equilibrium concentration for ICL? कितना हो? 0.78 minus x. What is equilibrium constant of iodine? It was x. Equilibrium concentration of chlorine? It was x. Put up the values. 0.78 and x is 0.14. This would be 0.14. This would be 0.14. इसको माइनस करोगे तो ICL का concentration मिल जाएगा. That is 0.64 molar. This is ICL, this is iodine, and this is chlorine. So this we can find out the equilibrium concentrations by the use of Kc. So Kc is used to determine equilibrium concentrations. Okay, what you have to do? Write down first of all balanced chemical reaction. After that, make a table. क्या लिखना है टेबल में? Initial concentrations, consumed or produced concentrations, and at last equilibrium concentrations. Then use the formula of Kc. By using the Kc formula, putting the values of Kc, we can find out x value. And that x value we can substitute here so that we can have equilibrium concentrations. These are the steps you have to follow for finding equilibrium concentrations. What are the steps you have to follow that you have to keep in mind. टेबल बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छे से टेबल बनाइए, आसानी से कैलकुलेशन. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो यूज द फॉर्मूला. इफ यू डोंट नो हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म इन डेसिमल्स एंड ऑल, देन यूज दैट फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो वो अपन फॉर्मूला यूज करके x का वैल्यू फाइंड. ऑलवेज यू विल गेट x वैल्यू 2. इफ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलवेज वी विल हैव x वैल्यूज 2. One will be valid, other will be invalid. तो जो भी वैलिड है, जो भी वैलिड मतलब